Welcome to this video. In this video, we are going to discuss Sylow's theorem. This is a very significant concept of abstract algebra. जब कभी भी आप हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और वहाँ पर एडवांस ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सिलेबस है, तो सिलोस थ्योरम पर बेस्ड आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका एक अपना रोल है, इसका एक अपना ऑरा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। आज इस वीडियो में हम लोग पी सब ग्रुप और सिलो पी सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही 2 लेमा अलोंग विद देयर प्रूफ्स उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दोनों लेमा और पी सब ग्रुप्स एंड सिलो पी सब ग्रुप विल प्रोवाइड अ फाउंडेशनल वर्क टू डिस्कस द सिलोस थ्योरम इन डिटेल। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ पी सब ग्रुप्स। सो लेट मी राइट दिस definition. These definitions are important. Okay, throughout the discussion of Sylow's theorem we are going to use this. Let G be a group and P be a prime. ठीक है? Then the first definition discuss the P subgroups. So a group of order p to the power alpha where this alpha is greater than equals to 0 is called a p group. Is called a p group. Okay, now the subgroups of G which are P group is known as P groups are known as P subgroups. ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर p टू द पावर अल्फा है उसको हम p ग्रुप बोलेंगे, और किसी भी ग्रुप का ऐसा सब ग्रुप जो अपने आप में एक p ग्रुप है उसको हम p सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट वाला एक सिंगलटन सेट ले तो हमेशा एक ग्रुप बनता है। इसका ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी p टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी p टू द पावर सम अल्फा टाइप का है, तो इसको भी हम p ग्रुप के अंदर ही कंसिडर करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप हमेशा हर ग्रुप के लिए एक p सब ग्रुप होता है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दिस सेकंड डेफिनेशन दैट डील विद सिलो p सब ग्रुप। Okay, it says let order of G is equal to p to the power alpha time m where p does not divide m. ठीक है, then a subgroup of G of order p to the power alpha is known as Sylow p subgroup. ओके, तो बेसिकली इस तरीके की ग्रुप्स जहाँ पर उसका ऑर्डर p टू द पावर अल्फा टाइम m है वेयर p डज नॉट डिवाइड m, तो इसमें p टू द पावर अल्फा ऑर्डर वाला सब ग्रुप एक p सब ग्रुप होगा। ठीक है,